Friends, today we are going to start the new one, that is permanent method of the birth control. That permanent methods are also called as sterilization method. Surgical methods are the terminal methods of the birth control. In the previous topic we have just seen the birth control or the family planning, where the birth control means to reduce the size of family by the mean of contraception. Contraception means the devices which are used to avoid the fertilization of sperm and ovum. There is no possibility of fertilization, and in that series we have seen some temporary methods. In temporary methods, the barrier method, physical devices, physiological devices, chemical devices, all these we have completed till now. Today we are just moving on to the permanent method of the birth control. So difference between the permanent and temporary method of the birth control is the permanent method is non-reversible method, while the temporary method is the reversible method. Temporary method is going to provide the protection against the pregnancy only till the time when the couple or individual is want to space between the child. But whenever they are just going to leave out that method, whenever they are just going to leave out those devices, those techniques, so that time what will happen, the couple will not have the probability of getting will not have the chances to avoid the pregnancies. They will start retaining their offspring. But here in case of permanent method, most of the methods are almost non-reversible. They cannot easily be revertible. Nowadays we can revert out some of the methods, but most of the permanent methods are non-reversible, since these methods are being implanted by the surgical processes. So that's why they are called as the surgical methods. Sterilization method means what? Because these methods are operated by the surgical conditions, by the surgery only under the sterile conditions, and that's why this is called as sterilization method. Terminal method, why we are saying it as the terminal method? Because this is the final method when the couple and the individual has decided not to go for next pregnancies. So that time they are just going to adopt the methods that are called as the terminal method. So this is the final most method of the termination of pregnancy. This is the final most method of spacing the child, or this is the final most method of reducing the family size. So how these methods are there, so that's what I just explained till now. The permanent means what? Non-reversible. So non-reversible है, that means it is having the higher success rate. इसका success rate बहुत ज़्यादा है, almost 90% success rate है, लेकिन इसका withdraw या drawback सिर्फ इतना है कि that can not be reversible. Reversibility बहुत poor है इस method की. So if the parent or the couple has choosed this method for the purpose of the birth control, और किसी कारण से they wish to revert it back, so this is very much difficult to revert the permanent methods of the birth control. So success rate तो बहुत अच्छा है, but this is very much poor in the reversibility. Parents इसको reverse नहीं कर सकता in any of the circumstances whenever they willing to do this. So this is this is advice to the couples, those who don't wish to continue next pregnancies, जो पूरी तरीके से avoid करना चाहते हैं pregnancies को. Those parents are being advised, so advice to the couple to avoid any more pregnancy. That is why the terminal method. Permanent method reversible नहीं है. Surgical method, because of the surgery can be, these methods can be achieved by the process of surgery. Sterilization हमने देख ही लिया, permanent sterility आ जाती है. That is why these methods are called as the sterilization methods. So now these methods, important point कि how these methods are working. So permanent methods are working by blocking the gamete transport passage by surgical means. How these methods are working? These methods are going to work out by the transport blockage or blockage of the transport passage of the sperm and the ovum by the surgical mean. इसमें gamete मीन्स स्पर्म और ओवम के ट्रांसपोर्टेशन को ही रोक दिया जाता है. सो द गैमेट इज नॉट एबल टू रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑब्टेन्ड और अकर देयर इन द फीमेल्स और मेल्स गैमेट. सो सपोज द मेल गैमेट इज नॉट एबल टू रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो कैसे फर्टिलाइज करेगा? या मेल्स फीमेल में प्रोसेस हो गई तो मेल गैमेट इफ इट इज रीचिंग देयर टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट फीमेल इज नॉट, female is releasing the ovum, but ovum is not able to release to reach to the site of fertilization. So this is what this is called as what? Sterilization. So permanent sterilization हो जाता है यहाँ पे, so इसलिए इसको sterilization. So I think ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे. Permanent method means to say what? The method which is non-reversible, surgical, because the process is process is
being achieved by the surgical means, sterilization, permanent sterility, terminal method, ये अंतिम उपचार होता है जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को रिटेन नहीं किया जा सकता है. So now we are just moving to see what are these methods. So these methods are of two types. One is called as vasectomy, and vasectomy is operatable there in the males. Tubectomy is operatable there in the female. स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं. वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी तो याद रहता है, पर जब वो लिखने जाते हैं या कुछ करना चाहते हैं इसके साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम वाइल राइटिंग द फाइनल आंसर्स दे आर बीइंग कंफ्यूज्ड हाईली कि वैसेक्टोमी किस में मेल में है कि फीमेल में, कि ट्यूबेक्टोमी किस में मेल में है कि फीमेल में. तो इसके लिए याद रखना आप लोग वेसल से कंफ्यूज होंगे बट ट्यूब से याद रहेंगे. ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ फीमेल नॉट ऑफ द मेल. सो ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को काटना, टॉम दो वर्ड है यहाँ पे, ट्यूबेक्टोमी. सो ट्यूब और टॉम, सो फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी. सो ट्यूब है मतलब फेलोपियन ट्यूब, सो फेलोपियन ट्यूब इज इन फीमेल, सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट. एंड वासा डिफरेंशिया इन द, सो वैसेक्टोमी, वैसे मीन्स व्हाट, वासा. सो रिमेंबर हियर, आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो ट्यूबेक्टोमी आई थिंक इट इज द बेटर वे टू अंडरस्टैंड एंड इट इज द बेटर वे टू रिमेंबर. Tubectomy, fallopian tube. Fallopian tube is female, so tubectomy is the method of sterilization there in the female. So let us see one by one how these methods are working. Vasectomy, the first method we are seeing, the vasectomy is the first method. So vasectomy just अभी हमने देखा कि this is the surgical method of the sterilization or permanent method of sterilization there in the males, that is being applied in the males. vasectomy में करते क्या, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, that is being operated onto the vasa differentia. Vas differentia is taken out, cutted and ligated. Are you getting my point? vas differentia को निकालना है, उसको काटना है, कट लगाना है और ligate कर देना है between the cutted point. So vasa differentia are blocked by cutting and tying up by the thread. काटना है, काटने के बाद में उन ओपन एंड को थ्रेड के थ्रू बांध देना है. तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा बट द सीमेन विल नॉट हैव द स्पर्म. दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू टेक केयर अबाउट. सो कैसे किया जाता है वैसेक्टोमी? वैसेक्टोमी सिंपल है, सेमाइनल वैसा डिफरेंशिया को निकालना, काटना, काटने के बाद में दो एंड्स को अलग अलग करके बांध देना. सो दिस इज व्हाट द स्पर्म विल नॉट रीच टू द सीमेन. सीमेन विल बी रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द इजैकुलेशन बट सीमेन विदाउट स्पर्म विल बी देयर. So here how the vasectomy can be performed. So first one is called as conventional vasectomy and second one is called as non-scalpel vasectomy. Conventional vasectomy is being performed by the local anesthesia and the use of scalpel as surgical devices there. Scalpel का use करते हैं. By using scalpel, incision is made into the scrotum. By incision the vasa differentia, vas deferens exposed thereon. उसको बाहर निकालना है, काटते हैं और काटने के बाद में थ्रेड से, सर्जिकल थ्रेड से उसको बांध दिया जाता है. और बांधने के टाइम पे ध्यान रखा जाता है कि दे मस्ट हैव द गैप ऑफ एटलीस्ट 1 to 4 सेंटीमीटर बिटवीन द टू पार्ट दैट हैज बीन कटेड एंड लाइगेटेड देयर. सो इज इट क्लियर? इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि इफ दैट मच गैप इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, सो ड्यू टू द सेल डिवीजन द वासा डिफरेंशिया कैन प्रोलिफरेट एंड ज्वाइन टुगेदर. अगर बांधा नहीं गया, इतना गैप नहीं दिया गया, तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बनते हैं. समटाइम द फेलियर has been reported there in vasectomy also. So वो किस कारण से possible होता है? If reunion of these ducts can be occur. So this is what, not only cutting is required, the tying is also required and that must have a gap of 1 to 4 centimeter. The enough gap should be provided between the two parts of the vas difference. नॉन स्कैल्पल, स्कैल्पल का यूज नहीं करेंगे. बाई डिसेक्टिंग नील आर द रिंग्ड फॉरसेप, इसका यूज करते हैं. केवल एक पंक्चर लगाया जाता है इन द स्क्रोटल सैक एंड ड्यू टू दैट पंक्चर द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द स्क्रोटल सैक इज गोइंग टू शो द अपीयरेंस ऑफ द वासा डिफरेंशिया. उसको निकालना, काटना, बांधना एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर सेम. इन कन्वेंशनल वेसेक्टोमी स्कैल्पल के थ्रू होगा और नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी में ओनली अ माइनर पंक्चर इज बीइंग अप्लाइड देयर इनटू द स्क्रोटल सैक और वहां से रिंग्ड फॉरसेप के थ्रू इसको बाहर निकालते हैं वासा डिफरेंशिया को, काटना, बांधना और वहीं के वहीं पैक कर देते हैं. दिस इज द मॉडर्न वे टू परफॉर्म द स्टेरिलाइजेशन देयर इन द मेल्स. सो मूविंग ऑन टू द फीमेल. So tubectomy is the next way. Tubectomy is the sterilization method occurs in the female. Just now we have discussed tube means fallopian tube. So यहाँ पे काटना और बांधना किसको होगा? fallopian tube को होगा. So cutting and ligation of both the fallopian tubes, not a single one, because ovary is going to release out the
eggs on the alternate manner, 1 month left ovary, another month right ovary. So this is what required to cut and ligate both the fallopian tube. यहाँ पे भी ध्यान रखना, the same distance has to be maintained. reunion के chances यहाँ पे भी होते हैं, तो reunion को avoid करने के लिए we need to go for at least 1 to 4 centimeter gap between the two part of the female two part of the fallopian tube which has been undergone in the process of tubectomy. What is there? What is the objective of that? They are going to blocks the passage of ovum, so ovum cannot reach to the site of fertilization. It will be released but cannot reach to the site of fertilization. ये भी कन्वेंशनल मेथड से किया जा सकता है. कन्वेंशनल मेथड मीन्स व्हाट? अपने एरिया में, अपने इंडिया में पहले हाथ का ऑपरेशन कहते थे. इन एब्डोमिनल रीजन लॉन्ग इंसाइजन इज बीइंग मेड, वहाँ से फेलोपियन ट्यूब को निकालना, काटना, बांधना. Due to that, so transabdominal surgery is the conventional mean, and nowadays new way of the surgery is being applied. A minor incision is required, and the incision is required, otherwise sometimes the vaginal passage can be used for the purpose of ligation and cutting in that. So that is called as laparoscopic method. That is the most recent method of the tubectomy, and the laparoscopic method is done by the loop development in the fallopian tube. यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड fallopian tube के अंदर लूप का डेवलपमेंट कर दिया जाता है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लूप द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम कैन बी स्टॉप्ड देयर ऑन, और उस लूप के टर्मिनल एंड को ब्लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है by the applying of a ring that is called as Cialistic ring. So in laparoscopic method में काटने की जरूरत नहीं होती. इंस्टीड ऑफ कटिंग आर द कटिंग एंड लाइगेशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड? इट इज गोइंग टू फॉर्म द लूप देयर इन द fallopian tube, and due to the formation of loop the ovum cannot easily transport, cannot easily move into the fallopian tube, and rest of the time what happens? The Cialistic ring is being applied on the open end, on the end of the fallopian tube. Due to that the mouth of fallopian tube is being closed. So for the process, that's just now I have just discussed with you, for the process can be done थ्रू द स्मॉल एब्डोमिनल इंसाइजन. उतना लंबा ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी की जरूरत नहीं है, लंबा रेस्ट की जरूरत नहीं है. सो स्मॉल इंसाइजन कैन बी डन, अदरवाइज द लेप्रोस्कोप कैन बी इंसर्टेड थ्रू द वेजाइना ओनली. ओके, सो दिस इज व्हाट. एक खास बात पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ इन द टुडेज लेक्चर ओनली. इन द स्टेरिलाइज्ड इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? दोज हु हैव अंडरगॉन इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, दे आर रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल, they are reproductively healthy organism, they are reproductively well individuals. They are going to produce their gametes, they are going to produce their sperm and ovum, but the sperm and ovum is not able to be reached into the semen. So ejaculation process will be there, and that ejaculation process will not have the sperm or ovum, that is having only the semen. So in sterilized individual, ejaculation will discharge only the semen, not the sperm. So these methods does not affect the sexual life of individual. So this is what the permanent method of the birth control. Now the third method that we have listed down in the previous lecture, first one was the temporary method, reversible. Second one was the permanent method, that is surgical method, tubectomy and vasectomy, vasectomy in males and tubectomy in the females. And third one, the medical termination in pregnancy, medical termination of pregnancy. So just let us take a look of the medical termination of pregnancy. What is the method? Medical termination of pregnancy, or MTP. Medical termination of pregnancy means what? That is voluntary termination of the pregnancy before the full term is called as medical termination of pregnancy. What you mean by the term voluntary termination? अपनी इच्छा से फीटस का या गेस्टेशन पीरियड के पूरा होने के पहले ही फीटस को अबॉर्ट कर देना is called as medical termination of pregnancy. So what is that? Intentional or voluntary termination of pregnancy before the full term is called as MTP. Are you getting my point? What is this? The intentional, अपनी इच्छा से pregnancy को abort कर देना before the full grown fetus or before the full term of the gestation period is called as medical termination of pregnancy, or MTP. So this is very much rare cases or rare examples where we are applying such kind of the methods, but somewhere this is very much important. कुछ ऐसी conditions बन जाती हैं when this is very much dangerous or this is very much harmful for the society to continue such kind of the pregnancies, that is not in the
welfare, or that is not in the welfare of the female, that is not welfare in the of the society of the child. So in that situation, sometime this methods can be applied, but not always. This method cannot be applied always, because that is going to increase the crime rates there in the society also. That is going to increase the crime against the female in the society also. So that is why the government has legalized the method. इस मेथड को लीगलाइज किया गया है बिना लीगल परमिशन के. द फिजिशियन और द गायनेकोलॉजिस्ट और द सर्जन कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ, कैन नॉट अंडरवेंट द प्रोसेस ऑफ the medical termination of the pregnancy, or MTP. So that has been legally authorized by the Medical Termination of the Pregnancy Act 1971. This medical termination of pregnancy was legally authorized by, legally applied by, legally accepted by the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उस कंडीशंस के बेस पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परमिट किया जाता है थ्रू द कोर्ट ओनली. देन ओनली the female can undergo in the process of MTP, otherwise it is an punishable offense. So just take care of that. So that is why this is called as MTP, is also known as legalized abortion. So medical termination of pregnancy का मतलब समझ में आया. gestation period पूरा होने के पहले ही voluntary termination of the pregnancy is called as medical termination of pregnancy. अब ये दो तरीके का हो सकता है. one is called as medical abortion and one is called as surgical abortion. medical abortion मतलब if it is being reported on the earlier weeks of the gestation period कि now the fetus is not safe, or the mother is not safe with the fetus, and now it is advised to undergo in the process of abortion. So that is called as medical abortion. तो ये किस समय तक के लिए? less than 7 week of the fetus or embryo is there, then only the medical abortion is permittable. If the abortion is undergoing, or abortion is being undertaken of the fetus or embryo that is of the less than of the 7th week, then only the मेडिकल एबॉर्शन कैन बी यूज. और मेडिकल एबॉर्शन के लिए किसी सर्जिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं है. सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज विदाउट सर्जिकल ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी. दैट इज बीइंग अप्लाइड, दैट इज बीइंग obtained by the use of certain medicines. These medicines are called as contraceptives, those who are working against the prostaglandin and progesterone. So the combination of these two medicines are being used, that is misoprostol. Misoprostol is a kind of prostaglandin that stimulate the uterine endometrium for the contraction. अपन देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में. एंड मिफेप्रोस्टेन दैट इज एंटी प्रोजेस्ट्रॉन. सो एंटी प्रोजेस्ट्रॉन होने के कारण ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी को रोकता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन उसको सप्रेस करता है, उसको मूव कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो फीटस डिटैच हो जाता है फ्रॉम द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. सो मेडिकल एबॉर्शन का मतलब अगर फीटस 7 वीक से कम का है, आजकल 7 से 10 वीक लिया जा सकता है, बट दिस इज नॉट सेफ. सो द सेफ पीरियड वेयर वी कैन अबॉर्ट मेडिकली दैट इज लेस देन 7 वीक ऑफ द एम्ब्रियो. सो बाय द मेडिसिन दैट इज मिसोप्रोस्टोल एंड मिफेप्रोस्टोन. मिसोप्रोस्टोल इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, promotes the uterine contraction, and mifeprostone is anti-progesterone that is going to reduce the hypertrophy of the endometrial lining. So that will going to, both of them are going to introduce, or both of them going to induce the detachment of the fetus from the site of implantation. So is it clear now? सर्जिकल एबॉर्शन अगर फीटस इससे ज़्यादा बड़ा हो गया है, इससे बड़ा हो गया मतलब 12 वीक का हो गया, 7 वीक से ज़्यादा का हो गया, 12 से 15 वीक का हो गया, सो दैट टाइम द medical abortion is not safe. So under the guidance of the expert medical practitioner and the expert surgeon, the surgical abortion is permitted. So if the embryo or fetus is more than 7 weeks, then only the surgical abortion is being permitted. So that can be recommended only till the 12th week. उसके बाद इसको भी recommend नहीं किया जाता. तो first trimester only can be considered as a safe for the purpose of abortion. और इसके लिए क्या किया जाता है? कुछ सर्जिकल मेथड्स यूज की जाती हैं. बाई वैक्यूम एस्पिरेशन, वेजाइनल ट्यूब से वैक्यूम ट्यूब डाली जाती है, दैट सक्स अप द फीटस व्हाटएवर इज बीइंग अटैच्ड देयर ऑन. और सर्जिकल प्रोसीजर रिमूव आउट करना, ये सारी प्रोसेस दैट इज नॉट ऑफ आवर इंपॉर्टेंस. सो रिमेंबर दैट इज व्हाट. बट नाउ डेज कुछ कंडीशंस में 5 months ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी सर्जिकली अबॉर्टेड इफ इट इज़ वेरी मच नेसेसरी. सो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि वाई इफ द एमटीपी इज दैट मच हार्ड. और एमटीपी के पीछे बुराई क्या थी? बुराई ये थी कि एमटीपी कैन बी अंडरगोन बाय द
क्रिमिनल्स, कहीं पे फीमेल फिटिसाइड बढ़ रहा था, किसी जगह पे द इंडिविजुअल दोज हु आर द रेप विक्टिम्स दे आर जस्ट फोर्सिंग द फीमेल्स टू अबॉर्ट द फीटस, दिस इज व्हाट दैट काइंड ऑफ द क्राइम्स आर अंडरगोइंग देयर ऑन, सो दैट्स व्हाट द लीगल प्रोटेक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड। फिर भी ये है कि अगर ऐसा भी है, इतना स्ट्रिक्ट बैन है, तो किन कंडीशंस में प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परमिट किया जाता है। सो फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वाई एमटीपी एंड द कंडीशंस आर देयर। द कंडीशंस, नंबर वन, किस कंडीशन में एमटीपी को लीगलाइज किया जा सकता है, किस कंडीशन में एमटीपी परमिटेड होती है। द फर्स्ट कंडीशन इज मेडिकल कंडीशन, when the resulting pregnancy may have the danger to the female's life. If the resulting pregnancy is having the danger to the female life, then only the process of MTP can be permitted. Eugenic means it is the branch of science which deals with the improved varieties of the human individual that is beneficial for the society. और वहाँ पे ये प्लान किया जाता है कि जो बेटर इंडिविजुअल है उनको सिलेक्ट आउट किया जाए, एंड दोज हु आर द हार्मफुल आर विद द इंफीरियर कैरेक्टरिस्टिक दे मस्ट बी रिमूव्ड आउट। सो यूजेनिक कंडीशन में यदि चाइल्ड, मेडिकल में कंडीशन में इफ द मदर इज हैविंग अ डेंजर ऑफ लाइफ फ्रॉम द फीटस, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इफ द चाइल्ड विच इज प्रेजेंट देयर इन द एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट इन द मदर्स uterus is suffering from any of the disastrous disease that can lead to the harmful for mother and the fetus both, उस condition में भी the child is having some serious illness, और जन्म के बाद में भी the child may have such kind of the illness. So on such situation also the MTP is being permitted. Humanitarian aspects are also there. In humanitarian aspect, this is to be seen कि what are the reason of MTP. If the pregnancy is being retained by the rape victims, or the rape victim is having the case of the pregnancy, so on that situation also the MTP is being permitted. Socioeconomic में ये देखा जाता है कि if the size of family is very large as comparison to the income of the parent, if the family is having already 2-3 children in the family, then only that is being permitted to the females or the family to undergo in the process of MTP. Or any last way is there where it can be permitted, that is failure of any of the contraceptive devices that has been already used up by the couples or individuals for the control of family size. So is it clear? So this is all about the birth control method. Now we are moving on to the next half of the chapter, that is infertility. So infertility means opposite to the fertility. Infertility means what ki if a couple is having regular unprotected sexual relationship for more than 1 or 2 years, and then too they are not having the chances of conceive, or they are not conceiving, then the condition is treated or dealt as the infertility. So failure to conceive even after 1 to 2 year of the regular unprotected sexual intercourse or sexual relationship, that is called as infertility. मतलब समझ में आ रहा है, the couple is having continuous unprotected sexual relationship without using any mean of the contraceptive devices, and they are not having the record of conceiving, the record of pregnancy. So that time the couples are referred as, that condition is referred as infertility. My dear student, one condition is sterility. So infertility and sterility are two different aspects, so they are not synonyms, they are just opposite to each other. Infertility is a temporary situation while sterility is the permanent situation. Infertility can be reverted back, can be treated back by some of the medicine, by some of the devices, some of the strategies, but the sterility cannot be. Sterility is a kind of permanent failure in production of the gametes or production of the new one, while infertility is a temporary situation where we can treat out that kind of situation and the couples may have the history of their new ones. So infertility or sterility समझ में है, कंप्लीट फेलियर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज स्टेरिलिटी, वाइल इनफर्टिलिटी क्या होता है, टेम्परेरी सिचुएशन है जिसको ट्रीट किया जा सकता है बाई सर्टेन टेक्निक, दोज आर कॉल्ड एज ART. विल सी व्हाट आर द ARTs देयर. इनफर्टिलिटी दो तरीके की हो सकती है, वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है the infertility in the couples where they are not having any previous history of the conception, जिसमें पहली प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री नहीं हो, और they are having the
condition of the infertility, that is called as primary infertility. So primary infertility is found in the patient those who are not having any previous history of the conceiving, or those who are not having any previous history of the childbirth. तो जिनमें पहली बार में ही infertility आ गई, that is called as primary infertility. And opposite to that, the secondary infertility found in the patient those who are having the previous history of the conceiving or previous history of the childbirth. तो पहले प्राइमरी का मतलब जिसमें चाइल्ड बर्थ हुआ ही नहीं आज तक, एंड दे आर हैविंग द इनफर्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी. एंड दोज हु आर हैविंग अर्लियर हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड देन टू दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. अब इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं? सो जस्ट सी व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इनफर्टिलिटी. इवन दो वी हैव डील्ड दिस point these reasons very much detail in the chapters human reproduction at time to time when we were discussing the chapter, but once again I'm just summarizing the factors, summarizing the infertility. So infertility is there in both males and females, दोनों में infertility हो सकती है. Remember my dear child, infertility is treatable, is curable, it is reversible. So remember इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन, ओलिगोस्पर्मिया. यू नोज वेरी वेल व्हेन द लेस स्पर्म काउंट इज देयर. व्हाट इज लेस स्पर्म काउंट? लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ द सीमेन इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया, बिकॉज वो यूजफुल नहीं होते, उतने स्पर्म नहीं होते, हेल्दी स्पर्म नहीं होते, दे कैन फर्टिलाइज द एग. सेकेंड वन, एजोस्पर्मिया. इफ द स्पर्म काउंट इज एब्सेंट, पूरी तरीके से बहुत कम है या तो एब्सेंट हो चुका है. Asthenospermia, mortality of the sperm is reduced there in the semen, that can also reach to the infertility because sperm cannot reach to the site of fertilization on the defined time period. Teratozoospermia, हमने देखा था deformed structure of the sperm, morphology sperm की अलग हो चुकी होती है, deformed हो चुका होता है, तो that is called as teratospermia. Cryptorchidism, if testis is not able to move downside or descend into the scrotal sac, तो इस कारण से क्या होगा? Spermatogenesis तो होगा, but maturation of sperm will not be there. Blockage of the vas deferens, blockage of vas deferens will not lead to the movement of the sperm toward the site of discharge. That means it will not move, the sperm will not travel the journey or will not travel in the male reproductive duct, so that it could be discharged into the female reproductive tract. Hyperthermia of the scrotal sac. Hyperthermia of the scrotal sac का मतलब normally the scrotal sac temperature is less than 2 to 3 degrees centigrade from the normal body temperature. This is required for the maintenance and maturation of the sperm. But sometime what happens, the scrotal sac is having temperature higher than the normal body temperature, so that is not required, that is not important, that is against the sperm maturation. और ये कैसे होता है? by the varicocele, varicocele hydrocele, varicocele hydrocele. hydrocele का मतलब water filled cavities बन जाती है scrotal में, that is called as hydrocele. varicocele, varicose veins are there, that is going to increase the temperature of the scrotal sac. Alcoholism may affect the spermatogenesis. Klinefelter syndrome, chromosomal disorder है, the male is not able to produce the functional gamete. Gonadotrophin deficiency, if the hormones like FSH, LH, progesterone, and they are not able to be released in the proper quantity, so they are being affecting and they are going to affect the normal production of the sperm and normal transport of the sperm therein. So same type, same kind of the condition may be reported there in the females also. So infertility in the females. Infertility in females, तो infertility in female में first condition is anovulation, means female is not able to ovulate out, not able to release out the egg. Oligoovulation, deficient ovulation, proper ovulation नहीं हो रहा है. Inadequate growth and functioning of the carpus luteum, अगर carpus luteum proper तरीके से growth नहीं कर रहा है तो you can understand the level of progesterone will not be maintained. तो उस कारण से क्या होगा? There will be no hypertrophy of एंडोमेट्रियम विल थ्रेड ऑफ. इम्प्लांटेशन के ऊपर असर पड़ेगा. फेलोपियन ट्यूब में नॉट बी एबल टू रिसीव द एग, किसी कारण से फेलोपियन ट्यूब की इंटरनल हिस्टोलॉजी में चेंज आ जाता है. द सीलिया इन द फेलोपियन ट्यूब, द म्यूकस इन द फेलोपियन ट्यूब आर बीइंग डिस्टर्ब, सो दैट इज नॉट एबल, दैट इज व्हाई द फेलोपियन ट्यूब इज नॉट एबल टू रिसीव द एग देयर ऑन. Defective endometrium is not proper, so that the implantation can be taken place there on. Congenital malformation in the uterus कभी कभार proper होता ही नहीं है, that is not proper for the implantation and the baby development therein, so that is the problem from the childbirth only.
defective cervix. Cervix is not able to receive the sperm either due to the higher acidity, due to the higher mucus thereon, due to the male formed structure of the cervix not able to receive the semen from the male. So in सारी conditions से females में भी infertility आ सकती है, but all these conditions can be treatable, can be curable. अब infertility को इनफर्टिलिटी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए सम ऑफ द मेथड्स वी आर अप्लाइंग, दैट मेथड्स आर कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर ART, assisted reproductive technologies. We are just taking care of these methods. Assisted reproductive technologies means the methods which are applied to treat the infertility conditions in the males and females, so that they could have the beauty of the childbirth, they could have their young ones, they could have their own offspring. So this is what the assisted reproductive technologies, ART. ART means what? The technologies which are assisting the infertile couple to get fertile, to get their young ones, to get their offspring is called as ART. So just take a look कि what are the ARTs, कौन कौन सी टेक्निक है ART में जो हम यूज करते हैं. Nowadays ART is being very much familiar among the individual, among the couples. So first technique there in the ART is called as in vitro fertilization, IVF technique. In vitro fertilization, in vitro means outside of the body, inside the glass. Outside of the body, inside of the glass means what? Sometimes the couples are not able to fertilize the egg in their body. Female के साथ में प्रॉब्लम होती है कि the ampullary stomach junction or the fallopian tube is not proper. जैसे हमने अभी देखा था females में कि defective fallopian tube is there. So female fallopian tube is not proper, so that kid could perform the fertilization process. But endometrium is proper, so that kid could perform the implantation. तो इन दोनों सिचुएशन में ये डिसाइड किया जाता है कि हाउ द इनफर्टिलिटी कैन बी ट्रीटेड. सो वहां पे प्रॉब्लम वाज दैट विद द fallopian tube of the female. So on that situation the gamete is aspired up, sucked up, taken out from the female body or female ovary, and the male testis also, means what? Sperm and the ovum will be collected outside from the couple. Sperm and ovum will be collected outside from the couple, and on that situation they are being kept in a petri dish, in a glass device, in a test tube under the nutrial broth situation in the laboratory, and they are being performed the fertilization. क्या किया जाता है? गैमेट्स को बाहर निकालेंगे, किसी ग्लास डिश में, पेट्री डिश में, ग्लास ट्यूब में रखेंगे, और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में रखने के बाद में उसको फर्टिलाइजेशन का वेट करेंगे. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यू नोज वेरी वेल, क्लीवेज विल स्टार्ट and will wait till 8 stage of the zygote, 8 stage or 8 blastomere stage. जैसे ही 8 blastomere stage हो जाएगा तो इसको वापस इंट्रोड्यूस कर देंगे इन द यूट्रस, क्योंकि इस समय तक यूट्रस इज रेडी टू रिसीव दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड रेडी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन. Now next way is that intracytoplasmic sperm injection. This is another IVF technique in which the selected healthy sperm directly injected into the cytoplasm of the egg by the use of a microscopic needle. After the fertilization, embryo is shifted back into the uterus. बहुत इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा इनसाइड, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन. सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देना. ये उस कंडीशन में देखा जाता है व्हेन द मेल इज सफरिंग फ्रॉम द ओलिगोस्पर्मिया, इफ द मेल इज सफरिंग फ्रॉम is suffering from the azoospermia condition. So many of the gametes are, many of the sperm are being taken out. उनमें से जो best sperm होता है which is able to fertilize, the best sperm is being chosen out, and that sperm is being directly introduced inside the egg cytoplasm by the use of a micro syringe, by the use of a micro needle, and that will allow to fertilize. After fertilization, waited till the 8 celled stage and will return back and moved back into the uterus. So that is intracytoplasmic sperm injection. So in vitro fertilization, बाहर निकाल के fertilization कराना in a nutrient broth, in a test tube or in a petri dish. Intracytoplasmic sperm injection, direct gamete को, direct sperm को introduce कर देना in the egg of, in the cytoplasm of the egg cell. That is called as intracytoplasmic sperm injection by the help of a microscopic needle. After the fertilization, the uterus, it will be shifted back into the uterus. Moving on to the next technique. Next way is gamete intrafallopian transfer, that is called as gift. That is actually the gift for the females, those who are
not able to give the functional gamete that is egg, जिनके पास में healthy egg का production नहीं होता, or they are suffering from the oligo-ovulation or anovulation. So on that condition the gamete intrafallopian transfers are being applied. Remember ये उसी केस में किया जा सकता है when the female is able to fertilize the egg but the female is not able to produce the healthy egg. So on that situation the gift is being given to the female. So gamete intrafallopian transfer, remember gamete intrafallopian transfer is not an in vitro technique, that is in vivo technique, because here only the eggs and sperms are being collected outside and the fertilization is being completed inside the body of female, inside the fallopian tube only. So that is in vivo fertilization, not the in vitro fertilization. Here what happens, first of all the menstrual cycle or natural menstrual cycle of the female is suspended by application of the higher level of the progesterone. Because of that the FSH activity will be suppressed. So once the menstrual cycle is being suppressed, then the female is being undergone in the process of female has been stimulated for the super ovulation. Super ovulation, more than one egg can be released during a cycle. So on that condition super ovulation is being treated or super ovulation can be stimulated by application of FSH. तो पहले तो सप्रेस करेंगे नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसके बाद में फीमेल हैज़ टू अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मोर देन वन एग इज बीइंग रिलीज देयर ऑन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन प्रोसेस. और सुपर ओव्यूलेशन के लिए वंस अगेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द FSH इज रिक्वायर्ड. सो FSH को यूज करेंगे. मोर FSH कैन बी गिवन ड्यू टू द मोर FSH, मोर देन वन oocyte can be released out at a time of ovulation. So after super ovulation eggs are being collected outside of the body और इनमें से जो भी healthy egg होगा that healthy egg is being shifted back into the female's reproductive tract or female's fallopian tube and sperm can be shifted directly back into the egg cytoplasm by ICSI और इसको भी नेचुरली सेंड कर दिया जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक सिचुएशन होती है द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इनफ एग, बट समटाइम द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग. इफ ऑलिगो ओव्यूलेशन सिचुएशन इज देयर देन दैट कैन बी प्रोड्यूस. द फीमेल कैन स्टिमुलेटेड बाय द सुपर ओव्यूलेशन. इफ द हेल्दी एग इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस दैट टाइम द सुपर ओव्यूलेशन टेक्निक कैन बी देयर एंड फ्रॉम वेयर वी कैन सजेस्ट आउट और सिलेक्ट आउट द बेटर एग आर द बेस्ट एग. और उसमें ICSI के थ्रू अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्पर्म को डायरेक्टली या डायरेक्टली अपन उसको भेज सकते हैं इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल इन द fallopian tube and sperm will reach to the site of fertilization. Secondly, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं those who are anovulatory. Anovulatory means they are not having the condition of ovulation. Egg are not being produced in the ovary. So on such situation we need to arrange a donor female. If the donor female is the female who is going to donate the egg for the purpose of फर्टिलाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. डोनर फीमेल का अरेंजमेंट करेंगे, उस डोनर से लिए गए एग के साथ में भी सेम प्रोसेस होगी. ICSI के थ्रू स्पर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा एंड फाइनली इट विल बी शिफ्टेड बैक इनटू द fallopian tube और द डोनर एग इज बीइंग शिफ्टेड इनटू द fallopian tube and the sperm will naturally reach to the site of fertilization. So that is what the gift to the female that is not able to produce either the healthy egg are not able to produce the egg. So are you getting my point? Gift, gamete intrafallopian transfer. This is actually the gift for the infertile couple. Next one is zygote intrafallopian transfer, that is GIFT. Zygote intrafallopian transfer, GIFT. Zygote intrafallopian transfer is a step of IVF, in vitro fertilization. This is a step of in vitro fertilization. Same process है. गैमेट्स को आइसोलेट करेंगे. द मेल गैमेट विल बी टेकन आउट, फीमेल गैमेट विल बी टेकन आउट. The fertilization will be performed there outside of the body, inside any of the glassware, that means inside the petri dish, inside the test tube baby, in a nutrient broth. After the fertilization zygote will allowed to grow by the division. 8-celled blastomere में इसको वापस डाल देते हैं in the body of the female inside the fallopian tube. That is why this is called as zygote intrafallopian transfer. GIFT, 8-celled blastomere, 8-celled or 8 blastomere stage of zygote is shifted back into the fallopian tube. That is why this is called as intrafallopian transfer. अब उसके बाद में नेक्स्ट तरीका होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. ये भी वही है, सेम प्रोसेस है, IVF की प्रोसेस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, बट
जिफ्ट और आईयूटी में डिफरेंस इतना होता है कि इन द जिफ्ट 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज जाइगोट इज बीइंग शिफ्टेड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, बट इन आईयूटी द एम्ब्रियो ट्रांसफर इज देयर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, द embryonic stage, that is blastocyst, actually is being shifted, or morula is being shifted into the uterus directly, not into the fallopian tube. And difference is that in gift 8 celled stage is being shifted, and in IUT more than 8 celled stage means what, if one more division is there, so that in 16 cell, that is morula. But most of the cases the 32 celled stage is being shifted back into the uterus, that is called as intrauterine transfer, and now the uterus is ready for the implantation. So this is what intrauterine transfer. So ये क्लियर हो गया जिफ्ट और आईयूटी. जिफ्ट का मतलब क्या होता है, 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर करना, और आईयूटी का मतलब क्या होता है, मोर देन 8 सेल्ड स्टेज, आइदर इन 16 सेल्ड और इन द 32 सेल्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर प्रेफरिंग द 32 सेल्ड स्टेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है. सपोज इफ द male is not able to produce the enough sperm, if the male is not able to inseminate, so on such situation the semen is collected outside, then semen is being introduced artificially into the female reproductive tract, so it is called as artificial insemination. artificial insemination में दो conditions बनती है कि if the male or we can say if the male of the couple is able to produce the healthy sperm, enough sperm thereon, but not able to discharge it inside the female reproductive tract, so collection of the semen with the sperm will taken up from the husband only, and that can be shifted back into the female's reproductive tract, so that is called as artificial insemination husband, AIH. But second situation, if the male is suffering from oligospermia or azoospermia or asthenozoospermia or teratospermia, on such situation what will happen, the donor will be arranged and the donor's sperm will be shifted back into the female's reproductive tract by the process of artificial insemination. D, that means donor. artificial insemination husband, artificial insemination donor. So ये clear हुआ आप लोगों को. Next, the last way is that gestational carrier or surrogacy. Surrogacy का मतलब आप सब जानते हैं, किराए की कोख. किराए की कोख is the final process. If the female is not able to produce the egg, or not able to produce the healthy egg, or producing the unhealthy egg, are not able to perform the fertilization, are not able to perform the implantation, हर एक सिचुएशन का फाइनल ट्रीटमेंट होता है सरोगेसी. सो नॉर्मली जब एग की कंडीशन आती है, फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द हेल्दी एग और प्रोड्यूसिंग द अनहेल्दी एग, तो उस समय सरोगेट मदर का यूज किया जाता है. तो सरोगेट मदर इज द मदर विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द एग with the sperm of the husband only. So surrogate is the mother with her own egg with the husband sperm. But sometimes when the problem is that ki male and female both are able to produce their healthy egg and sperm, but the female is not able to fertilize, or not able to retain the pregnancy due to the deformed endometrium, due to the deformed or defective uterine cavity. So this is what, and that situation fertilization बाहर कराया जाता है, sperm और ovum मेल और फीमेल का कलेक्ट किया जाएगा. आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IUT will be performed into the surrogate mother, that is gestational carrier. There is no involvement of the sex cell of the surrogate mother. Okay, so this is clear, the surrogacy or the gestational carrier. तो ये क्लियर हुआ. अब उसके बाद में वी आर मूविंग टुवर्ड द फेवरेट प्रोग्राम नाउ डेज. दैट प्रोग्राम इज इन द ट्रेडिशन, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. So what is test tube baby program? Normally the students understood that the baby is being developed inside the test tube, that is why this is called as test tube baby program. But test tube baby program is not the program where babies are being developed inside the test tube. Test tube baby program is the combination of two events, that is IVF, in vitro fertilization, and the embryo transfer. हमने देखा था embryo transfer either at the 8 cell stage or either at the 32 cell stage. So after in vitro fertilization, 8 cell stage or 32 cell stage will be formed, that is being introduced inside the uterus, and further development will take place there inside the uterus. So what is test tube baby program? So babies are produced by IVF and ET, but development occurs inside the uterus
of the same mother or in the surrogate mother. That is what called as test tube baby program. So are you getting my point? Baby is produced by IVF and ETA, but the development of babies will takes place there inside the uterus of the surrogate mother or of the same mother. That is what called as test tube baby program. So first test tube baby was taken birth there in the England, that is Louise Joy Brown. First test tube baby of the world is Louise Joy Brown. That was a girl child. It has taken birth there in the England on 25th July 1978. The first test tube baby of the world is Louise Joy Brown. It was a baby girl. 25th July 1978 इंग्लैंड. इंडिया में पहली बेबी जो जन्म हुई थी टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के थ्रू, दैट वाज नेम्ड एज दुर्गा एट दैट टाइम, बट nowadays she is known as Kanupriya Agrawal. The date was 6th August 1986 when she took birth. The process was performed there in KEM hospital and the gynecologist was Dr. Indira Hinduja. Nowadays you are very much aware about the name of that Indira IVF Center, Indira Infertility Center. So that is being run by Dr. Indira Hinduja only. So the Indira Hinduja was the first gynecologist who has performed the IVF technique or test tube baby program there in our country. So moving on to the next topic of that. So this is what we have completed all about the infertility and the infertility treatment, that is assisted reproductive technique. Now we are moving on to the next part of the topic, that is sometimes the fetus may have some of the disorder thereon. Sometimes this is required to find out the defect of the fetus. Sometimes this is required to find out the condition or the physical condition of the fetus there earlier in the uterus of the mother only. So on such situation some of the techniques are being employed to find out the normal condition of the fetus. So that techniques are called as fetal detection techniques. Fetal detection techniques में अपन fetus की normal conditions को, उसके sex को, उसके physical development को, उसके normal development को check कर पाते हैं. So this was called as fetal detection technique. And my dear student, fetal detection technique से question आ चुका है. One question was there before 2 years back कि lays down any two invasive and two non-invasive techniques. So invasive technique मतलब जहाँ पे हम sampling के लिए फीटस के अंदर तक इंट्रोड्यूस करते हैं सर्जिकल डिवाइसेस एंड वी आर टेकिंग आउट द सैंपल्स फ्रॉम द फीटस ओनली. और नॉन इन्वेसिव में वी नीड नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द सर्जिकल प्रोसेस, वी हैव टू टेक द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द फीटस ओनली. सो वी आर जस्ट मूविंग टू द फीटल डिटेक्शन टेक्निक. वंस अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट the fetal detection technique, why it is being used? That is being used for finding out the genetic or chromosomal disorder. Suppose fetus is suffering from any of the genetic defect, that is congenital defect, that is chromosomal disorder, Down syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, anything. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है, फिनाइल कीटोन यूरिया, कैप्टोन यूरिया, एल्बिनिज्म, और इफ सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स आर देयर दैट कैन बी एनालाइज्ड वेल देयर इन द fetal condition only. Sex detection, the sex detection can be done with the help of Barr bodies. ये important question है that you will learn during the genetics only, but Barr body is the present in the female only, that is one inactive chromosome, one inactive X chromosome in the sex pair of the chromosome is called as Barr bodies. That was reported by the Murray Barr, that is why this is called as Barr body. So one inactive X chromosome in the sex pair of chromosome is called as Barr body, और इसका यूज करते हैं, इसी को आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे. So males में because only one X chromosome is there, so there will be no Barr body reported. But if one Barr body is present, that means that is female. If there is no Barr body is there, that means it is male. So what are these techniques? We are just going to understand. So first of all invasive technique, just now I just discussed कि जिसके थ्रू अपन को fetus के अंदर devices को पहुंचाते हैं and we are taking out the sample of the fetus thereon by invading the fetus cells or the uterine cell, that are called as invasive technique. So invasive technique में basically दो technique होती हैं, one is called as amniocentesis and another one is called as CVS or chorionic villus sampling. Amniocentesis is the technique, कई बार पढ़ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक मोर फोकस ऑन दैट. सो दैट इज प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, जन्म के पहले होने वाली डायग्नोस्टिक टेक्निक है.
कुछ नहीं किया जाता इसमें, आपने पढ़ा हुआ है फीटल मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन वाज देयर, उसके पास में एमनियोटिक कैविटी थी दैट वाज फिल्ड अप विद द amniotic fluid. That amniotic fluid is having all type of biochemical components present of the fetus thereon. So through a long needle that is being guided with the help of laparoscope or USG, long needle is inserted into the amniotic cavity of the fetus guided with the help of USG, और उस long needle के through the fetal amniotic fluid is being taken out. लगभग 25 ml fluid का suction होता है, and that fluid is being undergone in the process of the biochemical analysis to find out the normal fetus or the fetus is having any of the abnormality. Remember, the fetal detection technique, that is amniocentesis, can be done during 14th to 15th week only, because at that time only we'll have the enough amount of the biochemical component present in their own. So moving on to एक चीज़ ध्यान रखने की है कि in the amniocentesis technique, that amniocentesis technique is banned there in our country nowadays. Legal ban is being applied on the technique. ये question हजारों बार पूछा गया in the examination. Why the fetal detection technique, that is amniocentesis, why the amniocentesis is being banned in our country? Just because of that, because this is being misused for the female feticide, that can be used for the female sex determination, fetus sex determination also. So that is being misused by the persons to determine the sex, whether it is female or male, and if it is female, so that has been killed there in the embryo only, aborted in the embryonic stage only. So that is why this is being banned there in our country. नेक्स्ट इन्वेसिव टेक्निक है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग. कोरियोनिक विलस आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है. कोरियोनिक विलस मीन्स व्हाट? कोरियोनिक विलाई. सो इन द कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग व्हाट इज टू बी टेकन आउट? द कोरियोनिक विलाई. सो ध्यान रखें, इन द एमनियोसेंटेसिस टेक्निक 13 to 15th वीक के बाद में एमनियोसेंटेसिस कैन बी परफॉर्म, एंड इफ द फीटस इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कंजेनाइटल डिफेक्ट, सो दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एट द लेटर स्टेजेस. और इस समय अगर अपन एबॉर्शन करते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, अपन अबॉर्ट करना भी मुश्किल हो जाता है. सो सम टेक्निक्स हैज टू बी यूज विच कैन बी आइडेंटिफाइड द फीटल डिफेक्ट अर्लियर देन दिस. सो द CVS कैन डिटेक्ट आउट द फीटस डिफेक्ट देयर इन द 8th to 10th वीक ओनली. बहुत पहले ही ये फीटल डिफेक्ट को पता लगा सकती है, दैट इज ड्यूरिंग द 8th to 10th वीक. इसके लिए कुछ नहीं करना है. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, कोरियोनिक विलाई का सैंपल निकालना है. कोरियोनिक विलाई का सैंपल किसके थ्रू निकाला जाता है? बाय द गाइडेड कैथेटर. द कैथेटर मीन्स व्हाट? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू द वेजाइनल पैसेज. दैट कैथेटर इज बिंग गाइडेड विद द हेल्प ऑफ USG, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी. वहाँ से एस्पायरेशन करते हैं, सकअप करते हैं, कोरियोनिक विलस का सैंपल निकालते हैं, एंड दैट सैंपल इज बिंग अंडरगोन इन द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल एनालिसिस. सो दो इन्वेसिव टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग. एमनियोसेंटेसिस का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई इट हैज बीन बैन्ड देयर इन आवर कंट्री even though it is having very wonderful uses. So ban क्यों है? Due to the female feticide only. It can be misused there in the fetal sex determination, can lead to the female feticide. Moving on to the next non-invasive techniques. Non-invasive techniques, सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी स्कैन. यू नोज वेरी वेल USG स्कैन. दिस इज वेरी मच पॉपुलर इन आवर कंट्री, एंड ऑल द फीमेल दोज हु आर प्रेग्नेंट हैज अंडरगोन इन द प्रोसेस ऑफ दैट. इसमें स्कैनिंग होती है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन. दैट अल्ट्रासाउंड मशीन स्कैन्स ऑल द इवेंट्स देयर ऑन द एब्डोमिनल रीजन ओनली. So that scan is going to send the high frequency sound waves to the uterus, and these sound waves are going to convert in form of the echoes. These sound waves, usually this sonography machine is going to send the sound waves टू द यूटरस, और यूटरस के अंदर डेवलप हो रहा होता है फीटस. तो फीटस की बॉडी से टकरा के दे आर बीइंग कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ इकोज, और इकोज कन्वर्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ द इमेजेस, एंड दैट इमेजेस कैन बी टेकन आउट ऑन द स्क्रीन. सो इट कैन सेंड द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू द यूटरस, और ये साउंड वेव्स बाउंस बैक होती हैं फ्रॉम द फीटस इन फॉर्म ऑफ इकोज. इकोज कैन बी कन्वर्टेड आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ द इमेजेस एंड कैन बी टेकन आउट इन टू द स्क्रीन ओनली, एंड दिस स्कैन में डिटेक्ट आउट द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी. और ये भी बैन हो चुका है बिकॉज, और केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर और गायनेकोलॉजिस्ट की परमिशन से ही हो सकता है, बिकॉज आफ्टर 3 months
the female external genitalia can be easily identified with the help of the USG. Next one is fetal echocardiography. You know very well, echocardiography is the detection of the heart defect. So this is an ultrasound test performed by the ultrasound sonography only. So this is an ultrasound test performed during the pregnancy to evaluate the heart of unborn baby. ये एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जिसके थ्रू अपन अनबॉर्न बेबी की हार्ट कंडीशन को चेक कर सकते हैं. So this is this technique, that fetal echocardiography, is going to assess the fetal heart structure and the function. Last one is called as fetoscopy. Fetoscopy is the procedure to see the fetus in the uterus. Uterus के अंदर किस तरीके का fetus है, उसका normal development हो रहा है कि नहीं हो रहा है, that has been maintained, that has been observed by the fetoscopy. So are you getting my point? Fetoscopy क्या है? This is the procedure to see the fetus in the uterus with the help of a device that is called as फिटोस्कोप. फीटस को देखने वाली डिवाइस को अपन कहते हैं फिटोस्कोप, और उसके थ्रू होने वाला एनालिसिस रहेगा फिटोस्कोपी. एंड द फिटोस्कोपी इज यूजफुल फॉर द identification of the fetal defect. It can take out the blood samples from the fetus or umbilical cord, and it can take out the sample of the skin tissues from the fetus. So these all are the techniques by which we can find out the defect of the fetus. So two invasive technique the questions are there. So invasive techniques में आपको क्या क्या बताना है, CVS और amniocentesis. नॉन इन्वेसिव टेक्निक में तीन बताएंगे, कौन कौन सी, एक तो फीटोस्कोपी, fetal ecchocardiography, और एक है USG ultrasound sonography scan. So this is all about the today's topic. Today we have completed three portion. First one was the permanent method of the birth control, including the medical termination of the pregnancy. Secondly, we have moved on to the infertility and the treatment assisted reproductive techniques, and finally the fetal detection technique. So this is all about for today. Thanks for watching.